एसोसिएशन के आप मेंबर भी हैं, काउंसिल मेंबर हैं, तो मैं रोशन मंसूर साहब को दावत दूंगा कि आप हमसे खिताब करें। अगर आप उर्दू में बोलें तो बहुत अच्छा है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन आई विल लिसन टू योर इंग्लिश। रोशन मंसूर साहब। English and inshallah I will talk in Urdu in the future days to come. Tax planning for the investors investing in Rabar. You know, as everybody is aware, the tax planning is most efficient part of any investments. And as you all are individuals, investing in your name, your spouse's name, your children's name, and sometimes from your business's name, individual. Until 2.5 lakhs, you don't pay any tax. 2.5 lakhs to 5 lakhs, you end up paying around 10% of tax. With more than 5 lakhs of your income, you end up paying around 20% of tax. And more than 10 lakhs, you start paying 30% of your tax. I don't see many smiling faces here. Nothing has been changed in the last 1 year. People keep asking me, some 10 minutes back, even Sanala Saab asked me, has it got any changed, the way you do business and all that? I said, still in the papers, inshallah, it will come in the reality soon. Moving forward, many investors who are investing, they say, why should I, pay up around 30% or 20% of tax if my income is more than 5 lakhs or 10 lakhs per annum? So people are planning. Shall I invest in spouse's name? Shall I invest in my daughter-in-law's name? Shall I invest in my children's name? How should I go about it? And many of you would have consulted a tax consultant where they would have specifically told you, if you invest in your spouse's name, the income what your spouse earns and you earn gets clubbed in the hands of you, yourself. There are certain provisions in the income tax which gives you a leverage of coming out of the tax net very methodically, technically sounded. Let me throw some lights on those provisions. Opportunities to invest in various businesses, your tax effect is 30%. The only way you can save your tax today is Chapter 6A deductions, which everybody talks about. Section 80, your LICs, your bonds, your government bonds, and so on and so forth. Majority of this are not Sharia compliant, because majority of this is basically a debt-driven funds. Therefore, investors could avail various opportunities as per Sharia law and also try more return on investments, such as stability of professionals like Rahbar. Firstly, let me throw some light on how people invest. If Rahbar and others are in business, they come back and tell you around, we could generate more than what a fixed deposit, a bank could generate for you, fixed deposit of interest. People are keen to invest. Mr. X is investing out of his own money, whatever he has. It is taxed in the hands of X, that is the investor. Suppose it is a borrowed funds. Suppose some borrowed funds from banking and financial institutions, taxed in the hand of the investors. Now you do a little bit of tax and everything. What do?
and how the investments from their names should flow to other businesses. Okay? Let me throw a light. This is a section of income tax. Don't look at the PowerPoint presentation. Many of you will, for many of you it goes above the head. Sections of income tax and others. Let me explain in a brief. If suppose me, I'm Roshan, I wanted to invest in one of the businesses what Mudassir referred me. I feel that this business could give me more than 30% return. So what do? Whatever money I had in my bank account, I transferred to my wife's account. And my wife, in turn, invests in businesses which Mudassir has referred. Now it comes to end of the year, when it comes for taxation, whatever income my wife derived out of this business will be taxed in my hands. That's what this section of the income tax talks about. So how to, just give you another example. X owns a house which fetches a rent of rupees 10,000 a month. Probably get away of the clubbing provisions. I'll explain in detail. I'll take my own example. I prefer to take my own example. I'm Roshan. I want to invest in my wife's name. Instead of transferring right away the cash, I have one property which yields a revenue of say 50,000 a month. I write a gift to my wife. All gifts are not taxed as per the income tax. There is a section 56 which tells if you are gifting your relatives is defined spouse, children's, daughter-in-law, son-in-law, your grandparents or grandmother, or sisters and brothers, their wives, their children. It is only limited to this. If you are gifting anything to only these people, this set of people, gift tax is not attracted. Otherwise it is attracted. You cannot gift your friend a property of yours. You will be subject to gift tax. Suppose if you are gifting your wife a property and it is not revocable during the lifetime of the transferor, that is me, then you could take a benefit of section 62, which clearly says that in these type of cases, whatever the income derived out of that income is not taxed in the hands of me but my wife. Clear? Clear? Gift can be income also, cash. Gift, yeah. Gift is any asset. Cash is also an asset. The gift has to be registered? Yes, the gift has to be registered. No, not important. Not here. It has to be registered. What about banking transaction? You will have to write, you will have to do a gift on a stamp paper saying that you are giving your wife so much of amount. More for which will be explained by respective lawyer. Okay? Clear? No, but I have done that. I have not written any agreement. What to do? So if you have not written any agreement, see, you can't dig in the past. You can't dig at the past. But if you come to me, I'll tell you the way out for it. Okay. Yes, obviously. Okay, going forward, suppose if that rental income of 50,000, whatever my wife gets, is invested in businesses which Mudassir is talking about in Rabat.
then even that income, whatever she gets out of Rahabar, is taxed in her own hands and not me. This could be only done in two ways. I will repeat it. This could be done by way of a trust, or this could be done in the way of gift. In case if you do it in any other way, it is taxable. Does anybody has any questions, or it's clear? Or clear? HIPAA is a legal document. It is not accepted if you do HIPAA. Okay. And with a affidavit, not registered. Income Tax Act says it has to be legally registered. So you'll have to consult your lawyer what is actually legally registered. Registered in the municipal office and in the corporation also the khata has. It's better. It's better if you do All that. that, then it is not taxable. Absolutely. It's better that you do that. There are two ways of looking at it. Whatever the income derived out of businesses you invest, you have two ways of showing it in your income tax return. One is business and profession, another is income from other sources. If you do it in the head of business and profession, your financials looks healthy. You could avail more financial availments from your banks and other financial institutions. Your tax outflows are neutral, because both the ways, whether you are doing it income from other sources, vis-a-vis if you do it with business and profession, your tax outflows are neutral. If in case of, suppose if you have made any loss out of such businesses, you can set off at least and carry forward those losses. Suppose, I'll give you a small example. Suppose if you have invested in 1 lakh in your friend's business, you have incurred a loss of 30,000. Okay? This is your whatever investments you did in your friend's business. So whatever investments business you are in earns you 1 lakh of income. Okay? So if you show it in the business and profession head in your income tax return, 1 lakh minus 30,000, you are taxed only at 70,000. Wherein if you show it in income from other sources, you will be taxed for whole 1 lakh. At least whatever losses you made, you will save 30% out of it. Smart way of doing it. Any questions? Please put up. If there are questions, please put up your hand. And Mansoor sir will not charge any fees today. Agricultural land, he's restricted, he's prohibited. The FEMA, the Foreign Exchange Management Act, prohibits you, the NRIs, to invest in agricultural lands, NRIs to invest in farmhouses, and basically which comes into real estate angle. They can buy a residential apartment, they can buy a land in Bangalore, no problem. It could be directly to the public. Yes, absolutely. It could be through the NRE or NRO. You could be getting a data for the interest. Apart from this, it's very sad part in our country. In a country of around more than a billion people, 3.16% pay tax in our country, and 80% comes from the salaried class. So we are again ending up paying interest to the bank, which is again against Sharia, Absolutely. which is not allowed. No. The 80G certificate, then you could avail a tax credit. It depends on the 80G what they get. Sometimes the 80G is available. This is 80G certificate is issued by the Income Tax Department for religious and for educational institutions, for health, it is almost 100%. Whereas for the religious and other institutions, it is mostly 50%. Most of it. The answer to this question, I had a topic. Please. It was regarding ELSS, Yeah. equity linked scheme, and equity linked savings scheme. Those are actually supposed to be high risk
that equity linked scheme, ALSS scheme, you will have to find schemes which are invested, in Sharia type of businesses, as he spoke. Last question over here. Suppose I am planning to buy an apartment, Okay. and my father gave me some amount to buy. Lucky you. Okay, what is the tax issue in that? There is no tax issue. If your father is giving your money to you, there is no tax angle which comes into the credit. But if you rent that out in the future, whatever income you get out of it is taxed in the hands of yourself and not your father. Because it is coming by will and inheritance through section 56(2) of the Income Tax Act. Is it for that transfer? How do income tax pay? Is it a gift? It is a gift. It's coming by inheritance. So do we need document for that? Generally, you do this many times in today's generation. No. Income tax act. Yes, you will have to have the income from your father when it comes to you. Otherwise, your father in the master will should have mentioned the nominees are the legal Bank transfer generated as a document. You should take a gift deed from his from him to. So it is mandatory, but however people don't follow it, you should manage it. Whoever has a 80G certificate from the Income Tax Department, then definitely you will get a 50% or 100% deduction of whatever amount you invest or whatever amount you donated to the Elder Foundation. Is it come under ITG? It has been applied for, it takes time You to applied get. for ATG, inshallah we will be getting it. That is applicable. Allah is signing to rush for some private function. Thank you. And your interesting way of presenting it. Jazakallah khair, inshallah glad you like. हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. प्रोजेक्ट ड्रॉप हमारे आगे अकमल रज़वी साहब बहुत अरसे से बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में एक्टिविस्ट माने जाते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगाते हैं हम ये काम के लिए. APCR एक इदारा है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स. बहुत अल्हम्दुलिल्लाह APCR काम कर रहा है. ये जो अभी नौजवानों को जो छुड़ाए थे हमारे इसरो के रिसेंटली हाल ही में, वो एक केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. APCR का उसमें बहुत सारा ताउन रहा है. अकमल रज़वी साहब APCR के सेक्रेटरी भी हैं. बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला कि आज हमारे बीच अकमल रज़वी साहब मौजूद हैं और आपने हमारे लिए वक्त निकाला. आपको मैं दावत देता हूँ कि हमसे खिताब करें अकमल रज़वी साहब. इनके हम लोग इनकी खिताब को इत्मीनान से सुनेंगे, फिर अजान हो जाएगी, बीच में अजान का वक्फा लेंगे, उसके बाद स्पीच ख़त्म होगी, फिर इंशाल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा. फिर हम लोग खाना खाएंगे. ओके, उसके बाद एक और प्रेजेंटेशन भी है. तो इंशाल्लाह आप पहले तो इत्मीनान से सुन लें, फिर इशान पढ़ के वापस आएँ, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम पर जाएगा. अकमल रज़वी साहब. मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कोशिश करूंगा कि लीगल जार्गन को छोड़कर बिजनेस के ताल्लुक से कुछ बेसिक मालूमात ऐसी हैं जो हर फर्द को मालूम होनी चाहिए. काफ़ी कॉर्पोरेट्स को हम एडवाइस देते हैं और हो सकता है कि आप में से जो लोग खुद बिजनेस करना चाहते हों या रेगुलर के लिए भी कुछ ऐसी बातें हों जो मुफीद साबित हों. सूरह बकरा की 282वीं आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला
देता है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखो और उस पर गवाह लो, और गवाह को चाहिए कि वो सताया न जाए एक दूसरों की तरफ से, और वो खुद अपनी गवाही में कोई फर्क न करे, अदल और इंसाफ के साथ गवाही को कोर्ट के सामने पेश करें। जितने भी आप लोगों ने धोखे खाए होंगे अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिनके लाखों रुपए डूब चुके हैं, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं होता है, या अगर होता है तो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस का लोगों को इल्म नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला ऐसा है कि बहुत खुशी की बात भी है कि हिंदुस्तान में शायद ये वाहिद कानून ऐसा है कि 1872 से उसके अंदर अब तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, और अब तक उसके अंदर कोई चेंजेस की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये नहीं है कि पुराना घिसा पिटा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और उससे तकलीफ हो रही है लोगों को, दूसरे कानून उसके अंदर तरमीम होती रही है और जरूरत भी महसूस की गई है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना कॉन्ट्रैक्ट किस शक्ल में वाइड होता है, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसका भी डेफिनेशन है। फ्रॉड, मिस्टेक, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके डेफिनेशन है जो आप रोजमर्रा जिंदगी में इसको फेस करते हैं, वही चीजों को कानून में स्टैट्यूट के जरिए क्लैरिफाई करते हैं। कोएर्जन का मतलब क्या है? कोएर्जन का मतलब बहुत साफ सिंपल ये है कि किसी ने चाकू दिखाई, गन दिखाया, आपसे सिग्नेचर ले ली कि आपने प्रॉपर्टी एडवर्टाइजमेंट में बेच दी, वो कोएर्जन है, आपने साबित कर दिया, तो वो सेल ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा, यानी पे वो सेल एग्रीमेंट कोर्ट नहीं बनेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यह है, हम में से आई एम श्योर कि हर दूसरे आदमी ने ये महसूस किया होगा, किसी के दिल को लेकर तमाम फरमाए, सऊदी में होता है, कमाता है, भेजता है, एक बच्चा यहाँ होता है, देखभाल करता है, वालिदैन ने सारे जायदाद उसके नाम कर दी गिफ्ट के जरिए या जिस तरीके से, इसलिए कि उनकी रोजाना की बीमारी में, उनकी जरूरत में काम ये बच्चा आ रहा है, और वो जो बेचारा बड़ा बेटा है वो जाके मेहनत कर रहा है, अपने वतन से दूर है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सारा पैसा भेज रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। कुछ केसेस ऐसे आपके भी सामने आए होंगे, मेरे सामने बहुत आते हैं। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी कि एक इंसान इस पोजीशन में हो कि वो उस आदमी के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। एक होती है गलती। गलती मसलन किसी ने कहा कि भाई मैं आपको एक घोड़ा बेच रहा हूँ जिसकी कीमत ये होगी, और वो घोड़ा मर चुका है, मालूम नहीं है दोनों में से किसी को भी, घोड़ा मर गया है, क्या सौदा हो रहा है घोड़े का, मगर दोनों को इल्म नहीं है कि मर गया है। अब जिसने सौदा किया वो ये नहीं वो किस तरह होगा, डिपॉजिट लेने से उनको कानून ने मना किया। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह करते नहीं है, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल परमिशन की जरूरत है। कोई ऐसा कानून जो हिंदुस्तान में ना है उसके खिलाफ अगर आप कोई काम करते हैं, जब ही वरना हर एग्रीमेंट जो किसी हिंदुस्तान के कानून को वायलेट नहीं करता है वो वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, और वो हर हाल में तो आपको ये कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है, वैलिडिटी जो आप एडवोकेट के पास लेके जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये सलाह देता है, सिर्फ और सिर्फ ये सलाह देता है कि कहीं ये हिंदुस्तान के किसी कानून से तजाद तो नहीं है।
प्लेन पेपर पे साइन करके दो। और अक्सर लोगों को यह गलतफहमी है कि अगर आपने बॉन्ड पेपर पे साइन नहीं किया है बल्कि प्लेन पेपर पे साइन किया है तो वो वैलिड नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप सादे पेपर पे साइन करें या बॉन्ड पेपर पे साइन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक तो है कानून को जानना, दूसरा है कि कानून के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस गवर्नमेंट ने पहले किए हैं। बेसिकली दो चीजों का इल्म बहुत जरूरी होता है। एक कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है, दूसरा स्टैंप ड्यूटी करेक्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं। स्टैंप ड्यूटी के मामले में इतना समझ लीजिए कि बॉन्ड पेपर जिसको आप बोलते हैं वो अलावा इसके कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक स्टैंप ड्यूटी लेना चाहती है। वो स्टैंप ड्यूटी आई है या नहीं आई है इसके बॉन्ड पेपर, उसके पेपर के रंग या पेपर की थिकनेस से फर्क नहीं पड़ता। तो जो गलतफहमी आप लोगों के जहनों में है कि प्लेन पेपर पे साइन करने से कुछ भी नहीं होगा, बॉन्ड पेपर पे साइन नहीं किया, यह गलत है, लीगल नॉर्मल या तो किसी कीमत से भी वो 1000 से ज्यादा नहीं होता है। तो जो ये शॉर्ट स्टैंप ड्यूटी, लेकिन इसका एक तो है स्टैंप ड्यूटी के स्टैंप एक्ट के अंदर ही एक प्रोविजन है कि आप डिप्टी कमिश्नर स्टैंप के पास आके बोल सकते हैं कि भाई मैंने ये एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन शायद मैंने इसकी शॉर्ट ड्यूटी दी है। तो उसको पावर है कि वो 1 से लेकर 10 टाइम्स आपके ऊपर एक फाइन लगाएगा और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी ले लेगा और फिर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन यही सूरत रजिस्ट्रेशन के मामले में